हेलो फ्रेंड्स। दीक्षा ऐप में आज का हमारा कोर्स है डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। जब आप अपना दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे, इसके बाद आप दीक्षा कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कोर्स यहाँ पर एक्सप्लोरर कोर्स के सेक्शन में डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन का कोर्स दिखाई देगा, जो 1 दिसंबर को यहाँ पर स्टार्ट हुआ है हमारा। जैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ पर आप स्क्रॉल को डाउन करना, ये आपको दिखाई दी जाएगा डाटा प्रोटेक्शन। जैसे आप डाटा प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे, अगर मोबाइल से आप कर रहे हैं, मोबाइल यूजर है, तो मोबाइल में जब आप दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे, आपको बॉटम साइड में राइट साइड में कोर्स दीक्षा कोर्स के नाम से शो होगा, वहां पर आप क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे, एक्सप्लोर के सेक्शन में जाना, आपको एक कोर्स शो होगा। अब यहाँ पर आपको यह क्लिक करना है इंग्लिश डाटा प्राइवेसी पे। इसके बाद कन्फर्म एंड एनरोल पर आपको क्लिक करना है, कन्फर्म एंड एनरोल। कंफर्म एंड ऑल पर क्लिक करने के बाद जो कोर्स आपको एक्सप्लोरर कोर्स सेक्शन पे दिखाई दे रहा था, वो माई लर्निंग वाले सेक्शन पे दिखाई देने लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोर्स शो होगा, इस कोर्स पे अपने आपको डबल क्लिक करना है, डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ आपको लेसन पे क्लिक करना है। आपके सामने 5 मॉड्यूल्स आएंगे, पहले आपको 5 मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, इनके व्यू बटन पे क्लिक करके कोर्स को कंप्लीट करना है। जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको असेसमेंट पे क्लिक करना है। असेसमेंट वाली पेज खुल जाएगी, इसको सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिसमें से आपको 21 क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन सही करने हैं। अगर 70% से कम होते हैं तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं। इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा, सर्टिफिकेट सेक्शन से हम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम सभी मॉड्यूल्स को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जब आपके सभी मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो असेसमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। व्यू बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके असेसमेंट के जो क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन भी किया हुआ। टोटल आपके 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 70% इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 अटेम्प्ट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर द सेंसिटिव डाटा। इनमें से कौन सा जो है सेंसिटिव डाटा के अंदर आता है? फोन नंबर, जॉब टाइटल्स, एम्प्लॉय नेम या फिर हेल्थ रिकॉर्ड। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा फोन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको शो हो रहा है, जिससे आपके सामने सेकंड क्वेश्चन से हमारा यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट रिकमेंडेशन बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट रिकमेंडेशन नहीं है? करेक्ट आंसर, यूज पब्लिक वाईफाई फॉर वर्क रिलेटेड डाटा ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट प्रोवाइड बाय डाटा प्रोटेक्शन लॉ। करेक्ट आंसर, राइट टू एक्सेस पर्सनल डाटा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023? करेक्ट आंसर है, प्रोटेक्ट द सिटीजन पर्सनल डाटा। नेक्स्ट, व्हाट डज द राइट टू सेफ्टी प्रोटेक्शन कंज्यूमर फॉर्म? करेक्ट आंसर, हार्मफुल गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट, what should the employee do to protect sensitive data in the workplace? Correct answer, regularly update password and encrypt sensitive data. Next, which right ensure that consumer receive correct and complete information about the products? Correct answer, right to information. Next, what is the data breach? Correct answer, unauthorized access or exposure of confidential data. Next, complete the popular saying about the free app economy. If the service is free, correct answer, product. Next question, which technology vector most responsible for turning homes and cities into? Correct answer is IoT and smart space. Next, what is the first step after a suspected cyber incident? Correct answer, change password immediately. Next, when a company share user data without consent, correct answer, DPDT Act 2023. Next, which acts replace the Consumer Protection Act 1986? Correct answer, Consumer Protection Act 2019. Next, what is the purpose of encryption? Correct answer, to prevent unauthorized access to data. Next, which of these a valid character
of constant. Correct answer is specific and informed. Next, a person upload a few photo use location service. इसका correct answer data infinite. Next, what should teachers ensure with while conducting online classes? Correct answer है protection student data. Next, under the DPDT Act 2023, who is referred as the data principal? Correct answer you, the individual. Next, in the analogy of the lock and the correct answer is data privacy. Next, what is the purpose of the biometric lock? Correct answer to prevent apps fraud. नेक्स्ट ये बैंकिंग एआई सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द कंसेंट मैनेजर इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शंस ए न्यू प्लेटफॉर्म टू मैनेज योर कंस्टेंट सेटिंग्स नेक्स्ट विच वाईफाई नेटवर्क इज जनरली अनसेफ करेक्ट आंसर है पब्लिक वाईफाई नेक्स्ट है विच ऑफ दीज लीगल फ्रेमवर्क करेक्ट आंसर है HIPAA नेक्स्ट ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 as a data principal which of the following your duty correct answer to not impersonate another person next which team is typically responsible इसका correct answer IT and security teams next what should you never share with anyone correct answer OTP passwords next which of the following is not a consumer right correct answer right to misleads next according to the DPDT acts इसका correct answer है verify parental consent ये थे हमारे सभी क्वेश्चन इसके बाद आपको रिव्यू एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करना है लास्ट आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके आप जो यहाँ पर सर्टिफिकेट वाला सेक्शन है यहाँ से आप इजीली सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से आप परीक्षा इस पे दीक्षा कोर्स का जो हमारा ये कोर्स है इस कोर्स में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोर्स हमारा था आज का डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन